एनडीटीवी ऑटो शो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। एक एक्साइटिंग लाइनअप आपके लिए लेकर आए हैं आज। चलिए देखते हैं व्हाट्स ऑन द शो टुडे। मर्सिडीज की हाल ही में लॉन्च हुई G63 AMG का रिव्यू। स्कोडा ने फाइनली दिखा दी है अपनी सब कॉम्पैक्ट एसयूवी काइलैक। इस हफ्ते हुए दुनिया के सबसे बड़े टू व्हीलर ऑटो एक्सपो EICMA से खास खबरें। The G63 has gone through a facelift and it's a G-Wagon. It cannot have too many changes. It has to retain its iconic design and it does retain that. But there are a few changes that we have seen here. One is this bumper now gets these bigger air vents. Then you will see AMG badging at various places. The AMG badging numbers have increased. So you will see the AMG badge here. It's on the side and at the rear as well. This time G63 also gets a 48 volt mild hybrid system which gives a boost also of 20 HP and 200 Nm. The wheels that you see here are 22 inches. The alloys have this matte golden color, looks absolutely stunning, but these 22 inches alloys are optional. It's a facelift, so not much has changed at the rear. और वैसे भी G-Wagon एक legendary गाड़ी है, अपने लुक्स के लिए जानी जाती रही है, तो बहुत ज़्यादा चेंजेस की ज़रूरत है भी नहीं। अभी भी आपको ये टेल माउंटेड स्पेयर व्हील मिलता है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर दिखाती हूँ और वो है इसके बूट में। अब आपको ये वुड लुकिंग पैनल यहाँ पर फ्लोर पर दिखाई दे रहा है, काफ़ी अच्छा दिखता है, थोड़ा सा प्रीमियम और बना देता है इसके बूट को भी। और साथ ही यहाँ पर आपको लगेज सेपरेटर भी मिल रहा है, जिससे आपको सामान अगर आप रखते हैं तो वो इधर उधर मूव नहीं करेगा। एक और चीज़ यहाँ पर मैं आपको इंटरेस्टिंग दिखाना चाहती हूँ और वो है साइड में यहाँ पर जो इसका फ्यूल फिलर कैप है उस पर भी आपको AMG की बैजिंग दिखाई देगी। And in true G-Wagon style, you get quad exhaust on the sides. यहाँ पर ये black कलर के AMG exhaust आपको दिखाई देंगे। लेकिन कुछ एक changes गाड़ी के अंदर भी हैं। Let's go inside. G-Wagon has always managed to give you very practical interiors with a lot of luxury. Then you get a touchscreen now, which is for the first time in the G63. But there are few buttons here. Your AC controls are on the buttons, so you can access them easily. Not everything goes on the screen, and that's a saving grace. You also get a digital driver display. Both these screens look like they are one screen and very well integrated in the dashboard. Under this carbon fiber flap, you get your wireless charger, two cup holders which are cooled and heated. You can opt from this button, either you want to keep it cool or hot. They also have heating and ventilation, and you also get these red seat belts. Don't they look super cool? You also get a small sunroof. Let's hop on to the second row. But I think the visibility is a bit compromised. You have this glass area, and of course this is big. There's decent amount of light that comes through, but the front visibility is compromised because the seat is quite high up, and with this accessory, this touchscreen, which is an accessory in this G-Wagon, if you choose this, then the visibility becomes quite limited and this feels quite in your face. But the things that you get here is 3-zone AC. You also have C-type charging ports. Then you also get a heating function, but no ventilation here. G63 AMG is packed with features. Now on to how the G63 AMG drives. Well, first thing first, you really feel on top of the world when you sit on this driver's seat. सब कुछ आपके नीचे दिखाई देता है. You get that high position and the visibility here is just so good. The G63 AMG gets the M177 4-liter V8 engine with a 48 volt mild hybrid system. The engine produces 585 HP power and 850 Nm of torque. और इसका हाइब्रिड सिस्टम 20 HP पावर और 200 Nm का बूस्ट भी देता है।
Mercedes has put the twin-scroll turbochargers between the cylinder heads for better response and taken various steps for better thermal management. Result is, there is barely any turbo lag and power delivery is extremely smooth. The engine is paired with AMG's SpeedShift TCT9G, a 9-speed torque converter gearbox. You get drive modes, there's comfort, individual, sports, sports plus, and then you have some off-roading modes as well. But the most fun mode is sports plus mode. The G63 employs interconnected hydraulic lines that link valves at the top of each damper. An electronically controlled pump adjusts the fluid pressure on each shock, enhancing stability. This active ride control makes sure that the body roll is very contained. It's a big car. It's really tall. Despite being this big, tall brick of a car, it still feels a lot more in control. The body roll is much contained compared to the size of the car that this one is. स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स प्लस मोड में सस्पेंशन स्टिफ हो जाता है। इसके साथ स्पिरिटेड ड्राइविंग करने में भी कॉन्फिडेंस आता है। वहीं रेगुलर ड्राइविंग के लिए कंफर्ट मोड परफेक्ट है। While we did not take this over 3.5 crore car off-road, and probably its buyer too will abstain from it, the car promises greater articulation when needed. And one thing that I have really come to appreciate are these seats. They're not just comfortable, they hold you very well when you need them. These are active seats, so when you are changing lanes or taking a sharp turn, the seat automatically closes on you and it gives you a very comfortable, very reassuring feeling. Even when you are going on bad roads, these seats hold you so that you feel a lot more comfortable. I think they are amazing. This is a G63 AMG, so it combines the off-roading capability of G-Wagon with the performance of AMG. This one does 0 to 100 in 4.5 seconds. This car weighs 2.6 tons, in fact over 2.6 tons, and it does 0 to 100 in 4.5 seconds. That is the power of this V8 engine. I am on the city roads. I'm going back to comfort mode because the roads here are just not suitable for sports mode. And in comfort mode, this car is ready to take on all the bad roads pretty much easily. You will feel them, but you won't find them uncomfortable. One thing that has been added and it makes your life very easy is this off-road cockpit. You press a button and you get all your off-road statistics right in front of you. The steering feel also changes with the modes. कंफर्ट मोड में ये थोड़ा सा लाइटर साइड पर है, लेकिन जैसे ही आप स्पोर्ट्स मोड में जाते हैं वहाँ पर इसका जो फीडबैक है वो बेहतर हो जाता है और आपको काफ़ी ज़्यादा प्रिसाइज पता चलता है ये स्टीयरिंग। इवन इन कंफर्ट मोड जैसे जैसे आप स्पीड पकड़ते हैं इसका जो हैवीनेस है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, तो कभी स्टीयरिंग वेग नहीं फील होता। हाँ, थोड़ा सा टॉर्क स्टीयर आपको ज़रूर पता चल सकता है। अमेजिंग रोड प्रेजेंस, ऑफ रोड कैपेबिलिटीज एंड परफॉर्मेंस manages to bully everyone around on road, off road or on track. Ready to shell out over 3.6 crores to buy a car? I think G63 is the one that you should be going for. Well, what is exciting about the Kylaq? That is what I'll be telling you in this video, and I have to start off things not with the design but prices first. इसके prices शुरू होते हैं 7.89 लाख रुपीस एक्स शोरूम से। अगर आप सामने की ओर देखेंगे तो एक पियानो ब्लैक ग्रिल आपको मिल जाती है, उसी में एक्सटेंशन के फॉर्म में आते हैं ये LED DRLs, जहाँ पर आपको वर्टिकली स्प्लिट हेडलैम्प मिल जाता है विद LED प्रोजेक्टर्स इन इट। एंड स्कोडा का कहना है कि सारे ही वेरिएंट्स में LED DRLs, LED प्रोजेक्टर्स और LED टेल लैम्प्स स्टैंडर्ड रहेंगे। अगर हम साइड्स की ओर रुख करें तो यहाँ पर आपको 17 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। मुझे इनका डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। आपको स्कोडा का वर्ड मार्क मिलता है एंड दिस इज़ डन इन अ टेक्सचर्ड फिनिश एंड आई एम श्योर इट विल कैच अ लॉट ऑफ अटेंशन। जो टेल लैम्प्स हैं वो थोड़े स्क्वायरिश हैं बट काफ़ी ज़्यादा कुशाक की याद दिलाता है। आपको ऑलमोस्ट 446 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है और आपको 60-40 स्प्लिट सीट्स मिलती हैं।
On the inside, the things look very familiar, I have to say. And for starters, it will be very tough to figure out if it is the Kylaq or the Slavia. But there are giveaways. For example, जो ये डैशबोर्ड है, इसका लेआउट थोड़ा सा बदला गया है. आपको यहाँ पर कुछ नए एक्सेंट्स, कुछ नए लेयर्स और कुछ नए टेक्सचर्स मिल जाते हैं. एक ग्रे थीम का इस्तेमाल किया गया है ताकि गाड़ी काफ़ी ज़्यादा क्रैम्ड ना लगे, थोड़ी स्पेशियस ज़रूर लगे. अगर बात करें स्टीयरिंग व्हील की, तो ये कुशाक और स्लाविया से ही आता है. एक 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगता है. इसी के पीछे आपको एक 8 इंच की वर्चुअल कॉकपिट मिल जाती है. एंड इफ आई हैव टू टॉक अबाउट द टच स्क्रीन, वेल इट इज़ 10 इंचेस इन इट्स साइज. एंड अगेन इट कम्स स्ट्रेट ऑफ फ्रॉम द स्लाविया एंड द कुशाक. फीचर्स की बात करूँ तो सनरूफ आपको यहाँ अच्छा खासा बड़ा मिल जाता है. उसी के साथ आपको मिलता है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस फ़ोन चार्जर, एंड अलॉन्ग विद दैट यू आर ऑल्सो गेटिंग वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले एंड ओवर 25 सेफ्टी फीचर्स एज स्टैंडर्ड. यहाँ पर आपको इमरजेंसी ब्रेक असिस्ट मिल जाता है और 6 एयर बैग्स स्टैंडर्ड मिलते हैं. आगे की सीटों में वेंटिलेशन फंक्शन भी मिल जाता है. बात सपोर्ट की जाए तो सीट्स काफ़ी सपोर्टिव हैं एंड दे ऑल्सो कम विद 6-वे पावर एडजस्टेबिलिटी. अब बात की जाए स्पेस की, तो ये सीट अपनी मैक्स पोजीशन तक पीछे की गई है और मेरी हाइट है 5 फुट 6 इंच. तो मुझे अभी भी ठीक ठाक नी रूम और लेग रूम यहाँ पर मिल रहा है. हेडरूम के मामले में भी कोई शिकायत नहीं है. एंड आई एम श्योर मुझसे ज़्यादा लंबे लोग एंड समबडी टॉलर देन मी विल ऑल्सो फाइंड इट स्पेशियस नो मैटर वॉट. यहाँ पर आपको स्मार्टफोन पॉकेट्स मिल जाती हैं और 2 USB Type-C चार्जर भी मिल रहे हैं ताकि आप ऑन द गो हमेशा चार्ज रहें और एंटरटेन रहें. बट अब बात करते हैं इसके प्लेटफॉर्म की. तो MQB A0 आयन आर्किटेक्चर मिलता है जो कि स्लाविया और कुशाक में हमने देखा है. बात की जाए डायमेंशंस की, तो ये गाड़ी 4 मीटर लंबी है, लगभग 1.8 मीटर्स चौड़ी है और 1.6 मीटर्स इसकी ऊंचाई है. बट जो व्हील बेस है वो रखा गया है 2566 mm. ये अपनी श्रेणी की सारी गाड़ियों से ज़्यादा लंबा है एक्सेप्ट फॉर द महिंद्रा XUV 3XO. तो यानी कि आपको बेहतर स्टेबिलिटी और ज़्यादा स्पेस यहाँ शायद देखने को मिल जाए. वेल स्पेस में तो मैं कह सकता हूँ कि काफ़ी अच्छे नंबर काइलैक को मिलते हैं. बट बॉनेट के अंदर कौन सा इंजन मिलता है वो मैं आपको अब दिखाता हूँ. So under the bonnet, you're getting the same 1-liter 3-pot TSI motor. It's a turbocharged unit and Skoda is saying they have made no compromise whatsoever. बात करी जाए पावर और टॉर्क आउटपुट की, तो 115 HP और 178 न्यूटन मीटर्स आपको यहाँ मिल जाते हैं. एंड इट माइट ऑल्सो रिटर्न अ क्लेम्ड माइलेज ऑफ अराउंड 20 किलोमीटर्स टू अ लीटर, विच इज़ नॉट अ डील ब्रेकर एट ऑल. गियर बॉक्सेस की बात करी जाए तो 2 ऑप्शंस मिलते हैं. वन इज़ योर 6-speed मैनुअल and lastly there's a 6-speed torque converter automatic. द NDTV ऑटो शो में एक बार फिर से आपका स्वागत है. इस हफ्ते दुनिया का सबसे बड़ा 2-व्हीलर एक्सपो हुआ मिलान में, EICMA 2024. चलिए देखते हैं क्या खास है इंडियन मार्केट के लिए वहां से. The new KTM 390 Adventure R was one of the most highly anticipated motorcycle unveils. The motorcycle looks the part of a Dakar-ready ADV and gets new bodywork along with a new engine and fully adjustable suspension. It looks ready to take on the likes of the Royal Enfield Himalayan and will be launched in India soon. Expect prices to start below 4 lakh rupees. The Aprilia Tuono 457 is the street fighter sibling of the RS 457. The new Tuono carries a different design language from all the other Tuono models and it looks muscular and purpose-built. It gets the same 457cc parallel twin engine platform as the RS 457. Features stay the same too. The Tuono 457 will be manufactured at Aprilia's plant in Baramati, Maharashtra alongside the RS 457. Expect it to be priced at 4 lakh rupees or less. The Googly from EICMA 2024. There were no leaks and no teasers for the BMW F450 GS concept. It is a 450cc adventure bike with the GS moniker and a parallel twin engine that makes about 47 to 48 horsepower. It is definitely a good looking ADV with a lean, mean design. It weighs in at 175 kg and the good news is it will go into production in 2025.
Expect more motorcycles from BMW's new 450cc engine platform. Now, the double whammy from Ducati. The Italian manufacturer took the wraps of the 2025 Panigale V2 and the Street Fighter V2, and both models get a brand new 890cc L-twin engine making 120 horsepower and 93 Newton meters. Both models are loaded with electronics, and there is a high spec S variant which gets top shelf suspension from Öhlins. We expect them to be launched in India by the middle of 2025. So now let's shift focus to the presence of Indian motorcycle brands at EICMA 2024, starting with Royal Enfield launching its Flying Flea brand for electric vehicles. Yes, all future electric motorcycles from Royal Enfield will be launched under the Flying Flea brand, and Hero MotoCorp was also very busy showcasing quite a few products at EICMA 2024. Perhaps the biggest highlight at EICMA 2024 was the entry of Royal Enfield into the electric vehicle segment with the new Flying Flea brand. All future EVs from RE will be launched under this brand, and we got a glimpse of the Flying Flea C6, an electric retro roadster that looks good and gets a decent set of features too. The exact specifications will be revealed later. Oh, and the next EV from RE will be a scrambler motorcycle. It is confirmed. The classic range of motorcycles has been bread and butter for Royal Enfield for almost 2 decades now. The company took the wraps of the classic 650 with its 648cc parallel twin engine seen in other motorcycles. The Big Classic is a beautiful looking motorcycle with a similar design language as the classic 350, and shares quite a few components with the Shotgun 650. It will be launched in India in early 2025. Hero MotoCorp is ready to take on the 200-250cc motorcycle segment with a 3-pronged model onslaught. The biggest two-wheeler manufacturer in the world took the wraps of the Xpulse 210, which gets a new engine with more power and subtle design tweaks. Then, Hero also revealed the Charisma XMR 250 Super Sport and the Extreme 250R, a street fighter, both getting a new 250cc engine having the same output and same features too. The design on both 250cc motorcycles is sharp and muscular. All 3 bikes will be launched in India in the coming months. Lastly but not in the least, Ultraviolet took the wraps of the Concept X, an electric adventure motorcycle based on the Ultraviolet F77 Mark II. Yes, it is still a concept, but we exclusively broke the news that Ultraviolet will enter new motorcycle segments, and ADVs is one of them. Details on battery, range and power will be revealed soon. तो कैसा लगा आपको आज का शो? आप अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर कर सकते हैं NDTV ऑटो के YouTube चैनल पर, और चैनल पर जाएंगे ही तो उसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। और साथ ही आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं अपने फेवरेट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय। ड्राइव सेफ और हमेशा सीट बेल्ट पहनकर ही गाड़ी चलाएं। बाय बाय, टेक केयर।